third semester and third year on, sorry, in the second year, third semester, आप लोगों का enrolled हो जाने वाले हो आप लोग कंपनीज के लिए. You're going to be get enrolled for your companies and all. And from now onwards, अगर आप इस चीज को नहीं जानोगे, in the final, you will going to have lots of problem. Okay. So एक और questions पूछा जाता है कि tell me something about yourself और self introduction. How to give your self introduction. अब इसमें भी स्टूडेंट्स जो होते हैं अच्छे से प्रेजेंटेशंस कर नहीं पाते. माय नेम इज दिस, कोई कोई कहता है माई सेल्फ दिस XYZ, आई एम फ्रॉम हियर एंड देयर, ओके, माई फादर इज दिस, माई मदर इज दिस, आई हैव 4 brothers and sisters. All bullshit. Listen one thing, both of you I'm telling you, HR को इंप्रेस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दिया जाता है. बिकॉज सिर्फ और सिर्फ आप ही इंटरव्यू देने के लिए नहीं आए हो. Thousands of hundred and thousands of students will going to be sitting for the same job at the time you are going. Am I clear? तो आपका अपीयरेंस, आपका डेकोरम, आपका ग्रूमिंग्स, आपका पर्सनालिटी, वो एक झटके में देख के समझ जाएंगे कि whether this candidate is suitable for my company or not. Or this is the first and very, very important question about your self-introduction, which is very, very important. The way you start your presenting your answer na, they easily going to understand that ये लड़का मेरे कंपनीज में काम कर पाएगा कि नहीं. आपका इमोशनल एथिक्स, आपका IQ लेवल, आपका EQ लेवल, ईच एंड एवरीथिंग वो एक झटके में समझ जाएगा कि आपका कितना हार्ड स्किल आपके में है, आपका कितना सॉफ्ट स्किल अच्छा है. And another important thing to Madhusmita and Pratyush. Okay, Madhusmita communication is excellent. The way she is communicating, the way of presenting her answer is absolutely perfect. I don't know about the Pratyush. Okay, Pratyush अभी तक कुछ उतना बात नहीं किया मुझसे, तो पता नहीं मुझे communication कहता है. प्रत्युष और मधुस्मिता, एक और चीज मैं कंफर्म करके आपको बता देता हूं. If your communication is absolute, is perfect, your pronunciations is perfect, your expression is perfect, 60% to 65 to 70% chances are there for the recruitment to recruit you. लिख लो ये बात. I'm telling you, because I am in the placement department. Before professor, I am in the placement department. I am looking both of you. That's why I'm telling you. इसीलिए मुझे ये क्लास असाइन किया गया था. ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो. चाहे आप हिंदी में बोलो, चाहे यार इंग्लिश में बोलो, दैट डजंट मीन, बट द वे यू आर एक्सप्रेसिंग थ्रू योर कम्युनिकेशन, इट विल गोइंग टू मेक यू सिलेक्शंस फॉर द फाइनल. आपका कम्युनिकेशन अगर परफेक्ट है, इफ योर कम्युनिकेशन इज एब्सोल्युटली गुड, ओके, nevertheless don't think at the back of your mind whether I can speak in English or not, I can speak in Hindi or not, that doesn't matter. Nowadays एक और चीज आपको मैं रिवील कर देता हूं. Nowadays कंपनीज एक और चीज आप लोगों को शेयर कर रहा है कि अगर कोई इंसान, सपोज एनी स्टूडेंट कंफर्टेबल स्पीकिंग इन हिंदी, he or she can able to speak in Hindi and can complete his interview in Hindi. But एक शर्त है कि उस शर्त को आप मानिएगा कि एक भी इंग्लिश वर्ड आप जब इंटरव्यू दे रहे हो, एक भी इंग्लिश वर्ड आप यूज मत कीजिएगा अगर आप हिंदी में बोल रहे हो. हिंदी में अगर 89 को क्या कहते हैं मालूम है? यू नो, इंग्लिश में हिंदी में 89 को क्या कहते हैं? डू यू नो? एनीबडी एल्स? कोई नहीं जानता है. हेलो प्रत्युष, मधुस्मिता, यू नो? No, sir. No, sir. नवासी. अगर प्रत्युष एंड मधुस्मिता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मधुस्मिता, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रत्युष. प्रत्युष, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कम्युनिकेशन कंटिन्यूअसली फॉर 5 to 6 minutes यू कैन नॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश. डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होगा आप में. तो इससे पहले आप क्लियर हो जाओ कि मुझे इंटरव्यू हिंदी में ही देना है. बशर्ते यही है, यू नीड टू गिव योर इंटरव्यू स्पीकिंग इन हिंदी ओनली. इफ यू वांट टू स्पीक इन हिंदी, speak in Hindi only. Or if you want to speak in English, you need to speak in English or complete your interview giving your answers in English only.
get this point very briefly. I'm telling you. Am I clear? That's why मैंने मैम से कहा था कि फर्स्ट यूनिट मैनेजरियल स्किल रखिए, क्योंकि दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉब. आफ्टर ऑल, यू आर sparing your monies after you're submitting or giving your monies to the college for getting a good job. Am I correct or not? For your good placements. तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे जॉब के अकॉर्डिंगली, तो ये तो आगे जाके आपको दिक्कत होगा. यू विल गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम्स. एम आई क्लियर? Any doubt so far I have completed? Any doubt on any questions you want to ask me about anything about the placements and all? You can ask me. Any doubt? No. No, sir. Nothing No, you want sir. to ask about the placements? Okay, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. बाद में अगर कोई सवाल ऐसा आता है, if you're getting have any perceptions in your coming at your mind about the placements and all, you want to listen something, you can ask me any questions. Okay, how the placement has been happening, what are the criterias are there, how they're going to select you, what are the norms, each and everything. Okay, so let's start today the first unit, business communication. Actually my voice is clear. मैं एक बार स्टार्ट करने से पहले आपसे करना मांगता हूं, ये वॉइस क्लियर टू यू? हेलो, आप लोग सुन पा? Am I audible to all of you? हेलो, am I audible to all of you? हाँ सर, आ रहा है अभी सर, वॉइस आ रहा है. Okay. Okay. So stay into with the first of all, it can be of semiotic rule, semiotic process. Semiotic process. You know what's the meaning of semiotic process? Semiotic process means sign process. Suppose whenever we are communicating, as you have known, that we are waving our hands. Okay, we waving our eyebrows, we waving our eyes, we are using our hands, fingers, legs, body movement. So that body gesture part is called sign process, semiotic process. Is it clear? This is the first one of communication. Now, the next is, what are the main steps communication lies? What are the main steps we have in communication? Okay, first of all, a messenger, suppose a messenger composing a message, then the message being encoded, then there is a transmission of that encoded messages, then there will be the reception or recipient of the signals, there will be the interpretation of that particular messages, and after that the message will be decoded by the receiver. This process is called the flow or the channel of communication. This complete process is called the flow or channel of communication. There's a very important question going to come in your examination. Write down the flow or channel of communication. What is the flow or channel of communication? Am I clear? What are the flow or channel of communication? The flow or channel of communications can be under 5 to 6 important processes are there. What are the 5 and 6 important processes? Number 1, first of all, there will be a message composition, which is called ideology. Suppose any messenger wanted to send any message to the receiver, he first of all going to think, what message I will going to deliver to the receiver. That is called ideology part. That is called message ideology. क्या होता है कि मैं जो भी मैसेज आपको सेंड करने वाला हूं या पढ़ाने वाला हूं या कुछ बोलने वाला हूं, सबसे पहले मैं सोचूंगा कि मैं क्या बोलूंगा. दैट इज कॉल्ड मैसेज कंपोजिशन. उसके बाद
Message encoding, I am going to write down or I am going to say what I going to say you the messages. That is called message encoding. I need to jot down all the messages, whatever the messages I will going to send it to you. That is called message encoding. ये दूसरा प्रोसेस होता है फ्लो ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में. दूसरा प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है मैसेज कंपोजिशन, दूसरा प्रोसेस होता है मैसेज एनकोडिंग, थर्ड प्रोसेस जो होता है ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेजेस. ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज को मतलब क्या होता है? आई एम सेंडिंग यू द मैसेजेस, आई एम सेंडिंग यू द मैसेजेस. The next part comes to the recipient of the messages. Means the receiver who is receiving or the receiver who is listening to my messages, they will going to receive my messages. Now I am doing the communication. I am the messenger and you are the receiver. और इन दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में, being a messenger and to the receiver, these are the process are there. Before going to explain any points to you about communication, first of all, I need to understand what is communication is all about and what are the types of communications that I'm going to tell my student. सबसे पहले ये थॉट, ये परसेप्शन मेरे दिमाग में रहता है. मैंने इस चीज को पहले डेवलप किया, उसके बाद मैंने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया. अब उसके बाद देखो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, आपको पहुंच रहा है, आप अपने तरीके से उस मैसेज को समझ रहे हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैं क्या समझ रहा हूं, कहां तक मुझे समझ में आ रहा है. दैट इज कॉल्ड मैसेज एनकोडिंग, सॉरी मैसेज ट्रांसमिशन. उसके बाद आप जब मैसेज ट्रांसमिशन हो जाता है, उसके बाद यू आर एनकोडिंग द मैसेजेस. आप डिकोड कर रहे हो, मैसेज को डिकोडिंग कर रहे हो. सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर क्या समझा रहे हैं, मुझे कितना समझ में आ रहा है, वेदर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, इसका मीनिंग्स क्या है. आप अपनी तरीके से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को, उस चर्चे को आप समझ रहे हो. दैट इज कॉल्ड मैसेज डिकोडिंग. एम आई क्लियर? हेलो. सो दीज आर द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. This is a very important questions going to come in your examination. What are the flows of communication? Am I clear to this part? Okay. Hello. Am I clear to this part? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Very good. चलो, समझ में आ गया. तो what is communication is all about? What is semiotic rule? What are the channel of communication? ठीक है, इतना समझ में आ गया है. Now next come to the next part is what are the scientific study of communication. एक और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आता है आप लोग के सिलेबस में है कि व्हाट आर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है, बहुत सारा बाइफर्केशन है इसमें, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. वन इज टू वन अनदर. एक को छोड़ के दूसरे आप समझने के लिए जाओगे तो पीछे वाला छूट जाएगा, आगे वाला आपको समझ में नहीं आएगा. It's a little bit complicated. That's why each and every point need to be understand very minutely and very clearly. And I'm repeating once again that if you find any difficult in my explanation, sir, this is the point I fail to understand. At once you ask me, sir, this is the point I fail to understand. You need to explain once more. Okay, I'm going to start again. Now, another important part is scientific study of communication. Now, this scientific study of communication means that it divided into 4 types. Number 1 is informational theory. Scientific study of communication divided into 4 types. Number 1 is information theory. Number 2 is communication studies. Number 3 is biosemiotic rule. Number 4 is biocommunication. Number 1 is information theory. Number 2 is communication studies. Number 3 is biosemiotic rule. And number 4 is biocommunication. These are the 4
important scientific study of communication. Now, what is communication studies? Communication studies उसे कहा जाता है which concern which concern or communicate with human communication. बायो कम्युनिकेशन स्टडीज किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन स्टडीज आर दोज which concerns only with human communication. They are called communication studies, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो. नेक्स्ट है बायोसेमियोटिक. Now this one is very important. Biosemiotic means this one which examine the communication between the living organism in general. This communication examine the communication between living organism. Suppose many persons are there, many trainers are there who understand the language of dog, who understand the language of animals. A trainer understand the language of an animals. Why? Because they done the scientific study of biosemiotic. इस तरह का पढ़ाई को बायोसेमियोटिक स्टडी कहा जाता है, जहां पर जानवरों की जुबान आपको पढ़ाया जाता है. इसलिए जब कोई ट्रेनर किसी डॉग को कहता है सिट डाउन, तो वो आपका बात नहीं समझता है कि आपने कहा सिट डाउन इंग्लिश में. उसके साथ एक साइन लैंग्वेज आप लोग यूज करते हैं. आप इस चीज को गौर कीजिएगा. एज अ ट्रेनर, whenever he communicate with a dog by saying sit down, and at that time they use the sign language also, और डॉग उस साइन लैंग्वेज को समझता है. फॉर एन एग्जाम्पल, कंप्यूटर में जो भी आप टाइप करते हो, वट एवर द थिंग्स यू आर टाइपिंग इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर आपकी भाषा को समझ में नहीं आता है. कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेजेस 0 and 1. Am I clear? Whatever you are typing in English, computer doesn't understand. Computer only understand numerical languages, binary languages, that is 0 and 1. The same with this biosemiotic, means sign language also. Any animals cannot understand the language of human beings. He or she can understand only the sign language. इसीलिए जब बायोसेमियोटिक कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है फॉर एनिमल बींग्स और फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अकॉर्डिंगली साइन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है. तो ये एक और साइंटिफिक स्टडीज ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ता है. द नेक्स्ट वन इज बायो कम्युनिकेशन. व्हाट इज बायो कम्युनिकेशन? इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पीसीज, between the plants, between the bacteria. Okay, ये एक और साइंटिफिक कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है, which is called bio communication. This type of communication which happen in between plants. आपने प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस का नाम सुना है? Have you ever listened the Indian scientist, a very reputed scientist of प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस? आपने सुने होंगे. Yes, sir. This man understand the language of trees, the language of plant, और उसने उस एक मशीन भी तैयार किया था. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन. प्रोफेसर साइंटिस्ट आचार्य जगदीश चंद्र बोस. You search it on your Google after the class is over. You can get the details. This person understand the language of plant. ये भी एक साइंटिफिक पढ़ाई है of communication, which is called biocommunication. So these are the four important types of scientific types of communication. Number one is information theory. Number two is communication studies. Number third is biosemiotic studies. And number four is biocommunication studies. अब तक मैंने जो पढ़ाया है प्रत्युष and मधुस्मिता, is it clear to you? Any doubt? So far I have completed. Any doubt on anything?
any example or any meanings that is not clear to you? So I want you to repeat the point information theory. Not Thank repeat, in you. fact, explain it. Information Oh, theory. information theory is a study of quality, qualification, storage of communication information between human beings. I repeat the word information theory, which studies the qualification, storage, communication information, or you can say communicative information between the general human beings. That is called information theory. ऐसा पढ़ाई जिसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिफिकेशन, स्टोरेज और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयर होता है इन बिटवीन जनरल ह्यूमन बींग्स, उसे हम इंफॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज नाउ आई एम शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्योरी to all of you, to Madhusmita and to Pratyush. This part of communication is called information theory of communication. Why? As because I am sharing the information on communication with you all. Am I clear, Madhusmita? Yes, sir. Any doubt? Do you want me to repeat the information theory again? No, sir. It is clear now. Okay. Now, Pratyush, anything else? No, sir, it's Biosemitic, clear. No problem. it's clear, na? Biosemitic, Yes, biocommunications, it's clear to you. yes, sir. Okay. Now, let's me go with the syllabus. Yes. Now, there is an important another aspect of communication. That is the what are the basic function of communication? These are the questions you will going to get in your examination. What are the basic function of communication? Communication का basic function क्या है? And in the interview also ये question पूछा जाता है कि being an MBA ना ये सब important questions है, तो आपसे definitely पूछेगा कि communication का basic function क्या है, हम इसका basic utilization कहाँ पर करते हैं? Tell me the fact. तो सबसे पहले बेसिक कम्युनिकेशंस का जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जहां हम शेयर करते हैं वो है रेगुलेटरी कंट्रोल. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल लेट गो विद द पॉइंट्स. द बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज number one is regulation control, number two is social interaction, number third is motivation, number fourth is information, number fifth is emotional experience, or you can say emotional expression. Number five is instrumental. Number six is personal. And number seven is heuristic. I think this is a new word to you. You are not acquainted with this word, heuristic. Okay, I'm going to explain you one by one. These are the 7 to 8 functions, basic functions of communication. 7 to 8 basic functions of communication. Number one is regulation control of communication. Number two is social interaction communication. Number three is motivation. Number four is information. Number five is emotional expression. Number six is instrumental. Number seven is personal. And number eight is heuristic. 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 Check the pronunciation. Heuristic. 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 Are you got clear? Points is clear to you? Hello? Point is clear to you? Yes, sir, it's clear. Okay. Now, I am going to explain one by one. What is regulation control in communication? Now, communication, what do you mean by actually regulation control किसे कहते हैं? Basic function of communication में regulation function क्या होता है? This communication can be used to control the human behavior. Simple. This communication can be used simply to control the human behavior. Directions,
or to direct others. ये पढ़ाई जो रेगुलेटरी कंट्रोल होता है, कम्युनिकेशन का ये पार्ट जो पढ़ाया जाता है, रेगुलेटरी कंट्रोल, दिस ओनली यूज टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ये पढ़ा जाता है। नाउ बीइंग एन एमबीए स्टूडेंट्स, यू ऑल आर definitely you will going to get a job of an HR or HR personnel, HR executive, or apart from HR, maybe to some other marketing managements, marketing executives and all. I don't know what your specialization. I don't know. Okay, so this part is very very important. Being an HR, human resources, how can you control the emotions of the labor qualities categories, or how can you control the persons who are below your below your dignities, okay, or who are working under your surveillance? How can you going to control their emotions? So through the communications, through regulatory control of communication, you're going to understand the behavior, the taste, the pragmatic rules, or the psychological rule of the any labor categories. वो चाहते क्या है, वो किस तरह से काम करना चाहते हैं, उसको किस तरह से मैं यूटिलाइजेशन करूंगा अपने कंपनीज में, उसका शिफ्टिंग क्या रहेगा, अगर मैं उसे 8 आवर्स से ज्यादा 9 आवर्स का शिफ्टिंग अगर मैं रेगुलर करवाऊंगा तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट दैट विल गोइंग टू कम। मेरा प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, डेफिनेटली आवर प्रोडक्शन इनपुट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी इंक्रीज, लेकिन उसको क्या प्रॉब्लम होगा, what will the consequences that will going to come to their mind? These all studies comes under regulatory control of communication, where you will going to study the direction, the behavior of any mediocre or any human beings. You are getting my points, Pratyush and Madhusmita? Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The next is, now social interaction means it is a function of communication that refers to the use of communication to socialize or to interact with the other people. This one is very very important. We the student, बहुत सारे ऐसे जो आप लोग के सोसाइटीज में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं, आपके नेबरहुड्स है, जो आप मतलब उतना घुल मिलते नहीं है। आप लोग इस चीज में सोसाइटीज में रहते होंगे ना, तो आप इस चीज को ऑब्जर्व डेफिनेटली करते होंगे। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट इन हिंदी फॉर योर बेटरमेंट। ओके, आप जब जो नेबर्स में आप लोग सोसाइटीज में आप रहते होंगे, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, बहुत सारे ऐसे इंसान होते होंगे या बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होते होंगे जो कि उतना सोशलाइज नहीं है। सोशलाइज का मतलब क्या है, वही मालूम नहीं है कि सोशलाइज का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोसी में किसी को रात को 10 बजे या फिर रात को 9 बजे कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है। ध्यान से बात को समझो। आपके पड़ोसी, आपके जो नेबर्स में आप रहते हो, द सोसाइटी वेर यू आर स्टेइंग, सपोज देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी नीडेड somebody else in residing in your society. तो आप प्रत्युष एंड मधुस्मिता, आप दिल से बताओ कि कितने इंसान जो होंगे घर के बाहर सिर्फ झांक के देखेंगे कि उस इंसान को मेरी जरूरत है। कितने ऐसे इंसान है आपके सोसाइटी में, आप गिन के बता पाओगे? डेफिनेटली आप गिन के बता पाओगे। या ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि सर ये पूछिए आप, कितने इंसान ऐसे होंगे कि वो उस प्रॉब्लम को देखकर हेल्प करने के लिए आगे चले जाएंगे? है ऐसा कोई? या फिर एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सपोज दिसंबर का महीना जब आएगा, एकदम कड़कड़ाती ठंड, आपकी सोसाइटी में किसी का डेथ हो गया है रात के 12 साढ़े 12 बजे। आप अब रजाई रोक ओढ़ के सो रहे हो, आवाज आ रही है, आपको बुलाया जा रहा है, प्रत्युष थोड़ा सा आना भाई, मेरे घर में ऐसा कोई हादसा हो गया, तेरा हेल्प चाहिए था। ठीक है, दोस्ती यारी में प्रत्युष चला भी जाएगा। प्रत्युष डोंट टेक इट एनीवे, आई एम जस्ट शेयरिंग एन गिविंग एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड Okay, बेटर sir, वे। no problem. सोशलाइज, ओके, सोशलाइज किसे कहते हैं? आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। प्रत्युष को घर से बुलाया जाता है, प्रत्युष भाई थोड़ा सा आना, मेरा घर में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, मतलब मेरा कुछ सडन ऐसा हो गया है,
तो जाना पड़ेगा थोड़ा सा आज। प्रत्युष के बगल में एक और दोस्त रहता है जो उसका भी अच्छा फ्रेंड है। वो रजाई से ओढ़ के सिर्फ खिड़की से एक झांक के देखेगा और फिर रजाई ओढ़ के सो जाएगा। और हो सकता है प्रत्युष जाके उसे हेल्प करे। ऐसा भी सोसाइटीज में ऐसे भी इंसान रहते होंगे आपके सोसाइटीज में, थोड़ा सा गौर कीजिए। तो दिस टाइप ऑफ स्टडी और दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज कॉल्ड सोशल इंटरैक्शंस। ऐसे इंसान जिंदगी में कभी सोशलाइज हो ही नहीं पाते हैं। कोई भी फंक्शन आप देख लीजिए, आप कोई भी इवेंट देख लीजिए, बढ़ चढ़ के कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्टिसिपेट करना तो दूर, वो बहुत सेपरेट, कॉम्प्लेक्स, अपने आप में रहना पसंद करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, सोसाइटी से घुलेंगे नहीं, अपने आप में रहेंगे। लेकिन ऐसा इंसान जो होते हैं ना, ये बाद में आके इनको रियलाइज होता है कि मुझे सोशलाइज होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ उस घर में नहीं, प्रॉब्लम उस घर में भी आएगा जो सोशलाइज नहीं है। तब आप क्या करोगे? आप इन्हीं की मदद मांगने के लिए जाओगे। और उस समय, उस वक्त अगर ये मुंह मोड़ दे तो आप कहां पर जाओगे? दैट इज वाई कम्युनिकेशन हमें सोशलाइज भी होना सिखाता है। इंटरैक्टिव जो होता है वो भी हमें सिखाया जाता है। इसलिए एमबीए पढ़ना इज एन आर्ट। आई थिंक एमबीए इज एन आर्ट, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। टू लर्न दिस मैनेजरियल स्किल इज एन आर्ट। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा आर्ट है। एक 3 घंटा का फिल्म आपको बांध के रखता है, आप सोसाइटी से हिल नहीं, आप उस सिनेमा हॉल से हिल नहीं पाओगे। बाहर की दुनिया क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो पिक्चर चलेगा। एवेंजर्स एंड गेम कोई सिनेमा हॉल में जाके देख के आया है क्या? प्रत्युष गए थे देखने के लिए एवेंजर्स एंड गेम? नहीं मूवीज सर, थिएटर सिनेमा में हॉल जा, में नहीं गए थे। सिनेमा हॉल में कोई मूवीज आप देखे होंगे, हाँ सर, डेफिनेटली देखे मूवी तो होंगे। देखे हैं सर हॉल में, हाँ। देखिए, ठीक है। तो कोई हिट मूवी आप जब देखते हो सिनेमा हॉल में हाँ। जाके, प्रत्युष दिल पे हाथ रख के बताओ, आप जब सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हो तब आप बाहर की दुनिया, मेरी मम्मी क्या कर रही है, पापा भी क्या कर रहा है, मेरा फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, हाँ। बाहर क्या चल रहा है, मेरा बाइक वहां पर पार्क किया हुआ है, क्या करना पड़ेगा, भूख लगा है कि नहीं, ये सब पता चलता है आपको। नहीं सर, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं, सिर्फ मूवी पे ही फोकस करते हैं। यस, मूवी पे फोकस करें। दिस इज कम्युनिकेशन, दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत बड़ा पावर है कम्युनिकेशन में। ठीक है, कम्युनिकेशन हैज अ लॉट्स ऑफ पावर। सिंपल, आप जितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाओगे, जितना आपका इंटरैक्टिव अच्छा होगा, जितना आप प्रेजेंटेबल हो पाओगे दूसरों के सामने, उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन के माध्यम से हो पाओगे। ठीक है, मैं बहुत सारा, जैसे फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई। इफ आई गो विद द सुंदर पिचाई इज नॉट अ वेरी हैंडसम मैन, आई थिंक। आई एम गोइंग विद दिस सोशल इंटरैक्टिव, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर कमिंग टू योर माइंड। सुंदर पिचाई इज नॉट अ वेरी हैंडसम मैन, यू नो, बट वेन सुंदर पिचाई, आप अगर यूट्यूब वीडियोस उनका मोटिवेशनल कुछ स्पीक्स, अगर वो जब कुछ कम्युनिकेट करते हैं, आप उस चीज को आप सुनोगे, यू विल गोइंग टू गेट mesmerized listening to Sundar Pichai. How brilliantly he is communicating with the person sitting before him or the person who is giving his interview. Perfect, really perfect. But apart from Sundar Pichai, Elon Musk is really very handsome. White skin, a glamorous look. Okay, with a good smile. Okay. But if you listen the communication of an Elon Musk, na, you will just run away from there. So rough and tough, the way he is communicating with the audiences. So rough and tough. Very rough and tough way he is communicating. If you listen to their communication, you're just going to run away from there. Oh no, I don't want to listen Elon Musk ever and ever. आप वहीं पर रतन टाटा को सुनिए, कम्युनिकेशन, मोटिवेशनल कम्युनिकेशन, डेफिनेटली गोइंग टू लिसन। वहीं पर आप अटल बिहारी को सुनिए, आप सो जाइएगा, यू विल गोइंग टू गेट स्लीप, you will going to get in a sleeping mode. Why? Because a very loose, very lethargic way Atal Bihari Vajpayee ji used to talk. So this is the difference between interactive session, और ये सिखाया जाता है हाउ टू इंटरैक्टिव। कम्युनिकेशन और इंटरैक्टिव दोनों दोनों एक जुड़वा बहन है।
कम्युनिकेशन और इंटरैक्टिव दोनों जुड़वा बहने हैं होती है. Okay, the more you communicate in an interactive way, the more people will going to get attracted. मधुस्मिता, समझ में आया है? What is interactive communication? What is social interactions? I think clear है. Yes, sir. Okay. Any questions that coming to your mind? No. Nope, sir. Okay. अच्छा, क्लास इज ओके. मैं थोड़ा सा फीडबैक ले लेता हूँ. क्लास इज ओके. Yes, sir, it is completely okay. Yes, sir, it's okay. Okay, it's okay. Okay. Any feedback, anything you want me to change? सिंपली देखो, कम्युनिकेशन में फीडबैक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जब पढ़ाऊंगा तो देखिएगा, फीडबैक इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. बट वो फीडबैक जो होता है सच्चाई वाला फीडबैक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप तसल्ली के लिए बोल रहे हैं. नो, नेवर. डोंट डू दोस थिंग्स. Suppose if you want any changes, suddenly at the particular point of time, within a peak of point of time, you need to speak, sir, you need to make these changes. I will really feel grateful. Thank you, my dear students. You are telling me to change this thing. तो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, anything you want me to change? Or the session is interactive? Okay, it's helpful. ठीक है? सेशन ठीक है? Yes, sir. ओके, ठीक है. मधुस्मिता, आपकी कुछ आवाज नहीं आ रही. Yes, sir. Session Will it be अच्छा. okay? Will it? Is it? ठीक है, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन. ये आप लोग तो जानते ही हो, कम्युनिकेशन में मोटिवेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेसेस रिक्वायर्ड मोटिवेशन while communicating with someone else. And being a student of an MBA, this thing is very very important. Motivation is very very important while doing communications to others. और ये मोटिवेशन जो है, not only required for your uh, communicating with your social friends or communicating with your friends, communicating with your teachers, but especially it will be required while you are going to do a job. आप जब जॉब करोगे ना, ये दिस मोटिवेशन विल गोइंग टू बी गेट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन में कहा जाता है, वट एवर द कम्युनिकेशन यू आर गोइंग टू शेयर विद समबडी एल्स, द कम्युनिकेशन मस्ट बी फ्रूटफुल एंड इंफॉर्मेटिव. बकवास तो सब कोई करता है, अननेसेसरी बकवास. आप लोग देखने फिल्म जाने, मैं फिर दोबारा वो फिल्म वाला एग्जांपल लेता हूँ. ऐसा बहुत सारे फिल्म आप देखने के लिए जाते हो जो एकदम बकवास होता है, बंडल होता है, जिसका कोई पैर पाव कुछ भी नहीं होता है, फिर भी हम लोग जाते हैं देखने के लिए. तो कम्युनिकेशन भी इस तरह से होता है. कम्युनिकेशन जो होना चाहिए एक्चुअली, वो थोड़ा सा इंटरैक्टिव होना चाहिए, वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए या इंफॉर्मेटिव होना चाहिए. अदरवाइज वो कम्युनिकेशन फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इमोशनल एक्सप्रेशन. दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इमोशनल एक्सप्रेशन, and while doing communication with someone else, you need to be इमोशनल. इमोशनल का मतलब ये नहीं कि आप रोना रोना स्टार्ट कर दो. आप लोग तो प्रत्युष तो बीबीए पढ़ा है. बीबीए, प्रत्युष, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी? This one chapter is there in BBA. What is the difference between empathy, EMPATHY, empathy and sympathy? Don't Google मत करो, गूगल में सही आंसर दिया नहीं है. और sympathy, what is the meaning of सर empathy and sympathy? सर सिंपैथी का मतलब होता है, मतलब किसी के दुख में मैं अगर उसके साथ, तो इसको मतलब हाँ, सिंपैथी बोलते हैं. और एम्पैथी मतलब मेरे को कोई परवाह ही नहीं है कोई किसी के सुखों में या दुख में, मतलब जाने का, इसी को एम्पैथी बोलते हैं. ठीक है, बहुत हद तक आपने कहा है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ. सिंपैथी का मतलब पहले जो प्रत्युष ने कहा है, इज एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हेनेवर यू आर स्टैंडिंग, if somebody else is need you help, you are standing with their help, you understand the feeling of an emotion of someone else and you try to help. And empathy का मतलब होता है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको दुख को आप महसूस कर रहे हो, लेकिन आगे बढ़ के आप उसे हेल्प करना नहीं चाहते हो. दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. वो जो मैंने रात वाला एग्जांपल दिया ना, रात को 12 बजे समवन एक्सपायर्ड एंड समवन इज कॉलिंग यू. अब प्रत्युष, आप जांच के देखो, आप उस समय एम्पैथी दिखाओगे कि सिंपैथी दिखाओगे?
दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये जवाब सोच के देना। उस समय आप ठंडी के मौसम, कड़कड़ा थी ठंडी, आप रजाई उड़े हुए, सडनली यू आर गेटिंग ए कॉल फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रेंड प्रत्युष आई नीड योर हेल्प दिस टाइम, some medical emergency required in my house, I need your help, please come। आप उस वक्त क्या दिखाओगे? एम्पैथी दिखाओगे कि सिंपैथी दिखाओगे? तो कम्युनिकेशन ये भी सिखाता है। ओके, सर लिटिल बिट ऑफ। उस टाइम मुझे मालूम है तुम जाओगे। अब मैं हाँ सच्चाई से, बहुत जन क्या करेगा, सिर्फ एम्पैथी दिखाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। बीबीए में पढ़ाया गया था इसको। आप अगर पढ़े होंगे तो डेफिनेटली गोइंग टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो आजकल जो बहुत ज्यादा इंसान होते हैं ना, वो एम्पैथी दिखाते हैं, सिंपैथी नहीं दिखाते हैं। सपोज while working near a company, आप लोग एमबीए कर रहे हो, कंपनीज में जब जॉब करोगे, विल गोइंग फॉर द कंपनी ना, योर बॉस विल शोइंग यू एम्पैथी, नॉट सिंपैथी विद यू। दे विल गोइंग टू कीप यू एम्पैथी विद यू, नॉट सिंपैथी। दे विल नेवर एवर गोइंग टू शो यू द सिंपैथी विद यू। प्लीज ये गलत फहमी दिल से निकाल दो कि मेरे बॉस सिंपैथी, मेरे सिंपैथी में मेरे साथ होते हैं। नो, नेवर। दे ओनली हैव अ एम्पैथी विद यू। आपके साथ वो सिर्फ सहानुभूति दिखा सकते हैं, हिंदी में उसे सहानुभूति कहते हैं, लेकिन आपके साथ वो कभी खड़े नहीं होंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी, एंड हियर communication required emotional expression. Then the next one is instrumental. Communication require instrumental also. What is instrumental? Used to ask for something, request, request mode। communication also urges for a request mode। ये request mode को हम instrumental कहते हैं। कम्युनिकेशन में इस पार्ट को, रिक्वेस्ट मोड को, हम इंस्ट्रूमेंटल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग कहते हैं, नॉट बेगिंग। बेगिंग इज अनदर वर्ड, वो अलग है। रिक्वेस्टिंग, सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्टिंग, दिस रिक्वेस्टिंग पार्ट और समथिंग रिक्वेस्टिंग और समथिंग टू बी आस्क्ड इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल part of communication। Then call personal। Look at the spelling of personal, Personal। What is the meaning of this? Simply, in communication, personal means just to use or just to express a state of mind or state of feeling about something, which is called empathy। Simply express a state of mind or feeling about something। आप रोड से जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आप उस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने माइंड में फील कर रहे हो, लेकिन आप वहां से फिर चले जाते हो, आप उस चीज को देख के। दैट इज कॉल्ड पर्सनल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दैट कम्स अंडर पर्सनल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एम आई क्लियर? जस्ट यू एक्सप्रेसिंग in your mind, just you feel this required about something, but you are never ever going there to help someone else. This part of communication is called personal communication। Now the last one is heuristic। heuristic का मतलब क्या होता है? HEURAIST, problems in communication। Heuristic call is problem solving in communication। Am I clear? Heuristic means problem solving in communication। Hello? Hello? Pratyush and Madhusmita, are you getting my points? I am audible? Hello? Yes, sir, you're सुनाई दे audible. रहा है? हाँ Okay, हाँ आप मुझे सर सुनाई दे रहा sure। है। मुझे लगा आप लोग चल जाए Mm. कोई question आ- का मतलब that use to produce a solution। So there is a glitch in your With voice. We can't hear you. okay, okay, just a minute, wait, glitch in my voice, glitch in my voice or glitch in the communication, which one?
So in Madhusmita, my voice, communication it is interrupt. or okay, glitch in my okay heuristic. Now it is clear. Am I audible? अभी clear है? Yes, sir. ठीक है. देखो, again I am repeating the part. Heuristic का मतलब होता है there is a problem solving method that uses shortcut to produce a good enough solution at a given limited time. It's called heuristic. ये ज्यादा से ज्यादा ना जितना मोटिवेशनल स्पीकर होता है ना, ये ज्यादा से ज्यादा इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज करते हैं. वेरी सिंपल, प्रिसाइज, शॉर्ट टेक्निक आपको बताते हैं. आपको 1 करोड़ 10 महीने में कैसे आप इनकम करोगे, ऐसा आपको बताएगा. द वे दे विल गोइंग टू प्रेजेंट यू बिफोर यू अ वेरी शॉर्टकट टेक्निक्स. आपको लगेगा मैं कल ही से इसको करोड़पति बन जाऊंगा. तो ये जिस तरह का वो कम्युनिकेट करते हैं और शॉर्टकट्स बताते हैं, इस कम्युनिकेशंस को हम ह्यूरिस्टिक कहते हैं. इट सिंपली मीन्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड थ्रू शॉर्टकट टेक्निक्स इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक इन कम्युनिकेशन. तो ये होता है बेसिक फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन. नंबर 1 is regulatory function, number 2 is social interaction function, number 3 is motivation function, number 4 is informational function, number 5th is emotional expression, then instrumental, then personal, then heuristic. These are the 8 important basic functions of communication. Any doubt? Hello? Any doubt so far? नो सर. No, sir. Okay. तो ठीक है, आज सेशन को यहीं एंड कर देते हैं या फिर व्हाट डू यू से? देखो प्रत्युष एंड मधुस्मिता, आप लोग जब तक कुछ बोलोगे नहीं, फीडबैक नहीं दोगे, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? लॉट ऑफ वास्ट सिलेबस कर देना, आई नीड टू कवर इट अप. तो आप लोग जैसे बोलोगे आई विल गोइंग विद दिस. आज सिलेबस मतलब आज यहीं पर रहने देते कम्युनिकेशन यूनिट 1 कंप्लीट करके. हम लोग फिर यस कल सर. हम लोग टुमारो टुमारो विल गोइंग टू हैव अ नेक्स्ट क्लास ना. Yes, sir. Tomorrow will be our next class. अच्छा अच्छा, मेक मी वन थिंग क्लियर. यू आर डूइंग, यू ऑल पीपल आर डूइंग एनी जॉब और व्हाट? आप लोग जॉब कर रहे हो क्या? हेलो, Yes, sir. आप लोग जॉब करते हो कहीं पर? Yes, sir. ओके, यू आर अ जॉब. ओके, तो जो टाइमिंग्स रखा गया है, ये टाइमिंग्स इज सुटेबल फॉर यू? दिस टाइमिंग इज सुटेबल? Yes, sir. This time is only suitable. This time is only suitable. Means your means your office get off at 7 And 6 or 5 a.m. 5 a.m. only, 5 p.m. only na. so my office timing is from 10 a.m. to 7 p.m. My goodness, means 7 p.m. Okay. Which sector you're working, Madhusmita? 9 So hours का shifting होता है? currently, so currently as sales executive in print on web.